पिलामाने आज वीडियो रे आमे यूनिट 2 देखुछंती। यूनिट 2 को आमे सॉल्व करिवा। आउ एटा जो इकोनॉमिक्स ऑनर्स फर्स्ट सेमेस्टर बेसिक इकोनॉमिक्स कोर 1 पेपर एटा। आ जो माने माइनर भी नहीं थिबे ताकर माइनर पेपर 1 पेपर 1 ओके सती पई ताकर पई ओके लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज द बेस ऑफ डिमांड? बेस ऑफ डिमांड रा आधार कोन प्राइस। गिव एन एग्जांपल ऑफ वीक ऑर्डरिंग indifference curve. Economic analysis, consumer is assumed to be rational when he attempts to maximize satisfaction. Economic analysis, producer is assumed to be rational when he attempts to maximize profit. Indifference curve measures the same level of dash derived from the different combinations of two commodities, say X and Y. So, it is same level of satisfaction. इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस इज ऑर्डिनल। ऑर्डिनल माने जोठी तमे ऑर्डर करि परिबा, रैंक करि परिबा हला, किंतु मेजर करि परिबानी हला। सैटिस्फैक्शन टाको तमे कहि परिबो जे मु मते इकोनॉमिक्स भलो लागे हिस्ट्री थारो। दैट मींस कि यू आर सैटिस्फाइड विथ इकोनॉमिक्स देन हिस्ट्री है ना। तो ऑर्डर माने रैंक करि पारुथबो हला। कार्डिनल माने मेजरमेंट। सपोज मैं जतले मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस पढ़िथिलो सेटा होची कार्डिनल एनालिसिस हला। सेटा हम मेजर करथिले ना, किंतु इंडिफरेंस कर्व रे तुम बस यू आर टेलिंग कि मु एप्पल प्रेफर करूची देन ऑरेंज हला। तो यू आर बेसिकली रैंकिंग। इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस वाज डेवलप्ड बाय एलन एंड हिक्स। इंडिफरेंस कर्व applicable only to which goods? Indifference curve is applicable to only which good? ये तो सब गुड्स पाई ही परिबो हैला। सब्स्टिट्यूट गुड, कॉम्प्लीमेंटरी गुड, गिफिन गुड। तो एठी आमे सब्स्टिट्यूट जतले गुड देखिबा सेठी आमे कोन करछंदी, सब्स्टिट्यूट गुड क्षेत्र रे इंडिफरेंस कर्व विल बी लाइक दिस। कॉम्प्लीमेंटरी गुड्स क्षेत्र रे ए भली हेबो। कैपिटल तो हमें देखंती नहीं ओके। तो मतलब गिफिन गुड रे किंतु कोन होची कि हमें पर्टिकुलरली ए गुड टाको हमें एक्सप्लेन करि परिबा बेटर वे इंडिफरेंस कर्व रे हैला। सो आंसर विल बी गिफिन। कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम वाज एक्सप्लेन्ड बाय डैश थ्रू यूटिलिटी एनालिसिस। यूटिलिटी एनालिसिस हम कि देथिले अल्फ्रेड मार्शल देथिले हैला। तो एठी दुटा जिंस मन रखिबो, इंडिफरेंस कर्व एलन एंड हिक्स, अल्फ्रेड मार्शल यूटिलिटी एनालिसिस। द कांसेप्ट ऑफ scale of preference is based on basis of consumers demand, choice, consumers choice, okay, consumers choice. Next is indifference curve slopes downward. Dash is the slope of an indifference curve implies that consumer has more if one commodity the slope or dash slope of that indifference curve when consumer has more if one commodity, more of one commodity, he gets less of another commodity. Okay, तो आमे एठी देखछन्ते ना इंडिफरेंस कर्व टा एबडी। तो एटा जदी y अमाउंट हला एटा x अमाउंट हे गेला, तापर आमे कोन करछन्ती x टा को बढ़ाई देउछन्ती, x टा को बढ़ाई देउछन्ती। तो सैटिस्फैक्शन लेवल सेम रहबा को हबो ना ए इंडिफरेंस कर्व रे। दैट मींस सेम लेवल ऑफ सैटिस्फैक्शन हेबा को हेले आमको x1 जदि आमर हे गेला x रो कंजम्पशन देन y रो हबो y1 ठीक अछि। ता माने आमे y कमे देले x बढ़े देले तो सेम लेवल ऑफ सैटिस्फैक्शन एतरे रहबो। तो दैट इज द आंसर इज डाउनवर्ड स्लोपिंग एंड इंडिफरेंस मैप कंसिस्ट ऑफ ए सेट ऑफ इंडिफरेंस कर्व्स हला। केतोटी इंडिफरेंस कर्व को नै ही इंडिफरेंस मैप हेते। इंडिफरेंस कर्व मस्ट बी कन्वेक्स टू द ओरिजिन। The necessary condition of consumers equilibrium is MRS XY equal to the price ratio.
ठीक अच्छे आउ एमआरएस एक्स वाई कार स्लोप एमआरएस एक्स वाई इंडिफरेंस कर्व स्लोप आउ पीएक्स बाय पी वाई कार स्लोप बजेट लाइन स्लोप ठीक अच्छे तो इक्विलिब्रियम रे हम कौन करते कि गोटे बजेट लाइन ले और बजेट कॉन्स्टेंट और उसको इंडिफरेंस कर्व के साथ टेंजेंट करा दिए ठीक है ना तो दिस इज इक्विलिब्रियम पॉइंट तो ये स्लोप सेम हो जाता है दोनों का इसका एम आर एस एक्स वाई एंड इसका पी एक्स बाई पी वाई then convexity of indifference curve implies diminishing marginal rate of substitution all right now dash represents all the combination of goods that what a consumer can purchase that a consumer can purchase at given price and given income budget line ठीक है डैश इज ग्राफिकल इलस्ट्रेशन ऑफ बजेट कंस्टेंट ग्राफिकल इलस्ट्रेशन को भी बजेट कहते बजेट कंस्टेंट को आम केमती लिखते पी एक्स इंटू एक्स प्लस पी वाई इंटू वाई इज इनकम ठीक है ना तो आम जो बजेटा देखा ये भाव देखा तो एति से वाई किपर एति से एक्स किपर आट द गिवन प्राइसेस तो आट पी एक्स how much x he is purchasing plus at py how much y he is purchasing अगर दीटा जाकर एक्सपेंडिचर आम प्लस करदेबा ताहले दैट विल बी इक्वल टू हिज टोटल इनकम दैट इज योर बजेट कंस्टेंट जितेबाला यहाँ को आम ग्राफिकली प्रेजेंट कर दैट इज योर बजेट लाइन स्लोप्स डाउनवर्ड है ना डाउनवर्ड बजेट लाइन हैज कांस्टेंट स्लोप है ना and dash shows all the consumption bundles that someone can afford at given prices and given money and budget line then budget line normally take the shape of straight line okay when consumers income increases the budget line shifts to the right or outward है तो तुम ये बजेट लाइन जोटा आम कर इनकम बढ़ीगला इनकम बढ़ीगले आम बजेट लाइन पैरेलल लेके शिफ्ट हो ओरिजिनल बजेट लाइन ले सब जो बी एल तो B1L1 is a new budget line so you can see that it is parallelly shifted to the right then normal shape of indifference curve is convex then that consists of number of indifference map माने केते गोटे indifference map जदि नहीं कि गोटे पिक्चर आसला that is indifference map marginal rate of substitution curve slopes downward okay downward then why does price line shift to the right why does price line shift to the right so price line is nothing but your budget line ठीक है it's another name budget line नो अन्य नाम हला price line तो दी प्रकार ही पारे जते बेले कंज्यूमर रो रियल इनकम इंक्रीज हो जाए है कंज्यूमर रो रियल इनकम इंक्रीजेस मतलब they can purchase more goods more of both goods ठीक अच्छे सेते बेले ही एटा बजेट लाइन राइटवर्ड शिफ्ट करे what does higher indifference curve indicate it indicates higher satisfaction what is the condition for consumers equilibrium mrs xy equal to negative px by py okay what does okay अगर नेगेटिव लिख रहे हो तो फिर दोनों साइड लिखना है अगर पॉजिटिव लिख रहे हो तो ऐसे ही लिखना है ठीक है एमआरएस एक्स वाई तो ये गोटे साइड है बनाई है तो ये पॉजिटिव ही रखते हैं दोनों साइड का ओके हाँ पी एक्स बाई पी वाई देन व्हाट डज स्ट्रेट लाइन इंडिफरेंस कर्व शो स्ट्रेट लाइन इंडिफरेंस कर्व शोज अभी ये भी कही that perfect substitute okay for perfect substitute question आसी पारे perfect substitute goods in this case you have
straight line indifference curve ହେଲା. Then what should be the nature of income effect in case of inferior goods? Inferior goods क्षेत्र income effect negative, माने income बढ़िले आमे से goods टाको कम किनते. तापरे in which case the compensating variation in income is involved. Compensating variation in income okay. जदि प्राइस चेंज है सही क्षेत्र में ओके चेंजेस इन प्राइस what effect is caused if prices of related goods change? What effect is caused if prices of related goods change? So it depends कि what is the type of related good. जदि substitute good क्षेत्र होइतिबो substitute good माने चा कॉफी गोटाए कंज्यूम कले आरटी करि परिबो नाही आ गोटे हला कॉम्प्लीमेंटरी गुड ठीक अछि तो कॉम्प्लीमेंटरी जेमति कि हमें बाइक एंड पेट्रोल नहीं परिबा हला और पेपर एंड प्रिंटर जदि पेपर प्राइस बढ़ी गला ताला हमें आ प्रिंट करिया कि कम करिया प्रिंट तो प्रिंटर डिमांड ता कमी जीवा हला पूर्व अपेक्षा तो ये कौन हो गोटाकर प्राइस बढ़िले एटार आरटार डिमांड कमी जाऊँगी कॉम्प्लीमेंटरी बाइक की कॉम्प्लीमेंटरी गुड्स रे हला सब्स्टिट्यूट गुड क्षेत्र कौन हम जदि चा आ कॉफी एग्जांपल लेवा ताले चा जदि कॉस्टली हो गला 5 टका बदले 10 टका हो गला कॉफी किंतु 5 टका ही अच्छी ताले आम से क्षेत्र में कॉफी ही पीवा हला ओके किंबा जदि कॉफी एमती भी पारे 10 चाटा 5 टका बदल में आमर होगा 10 टका है कॉफी आमर 10 टका अच्छी आम देखिए कि आग 10 टका देकी तो आम कॉफी पीऊ नथिले किंतु एबे आम कॉफी पीवा को इंटरेस्टेड हेबा कबा चा पीले तो 10 कॉफी पीले तो 10 कहीं आम कॉफी पीवा नहीं है ना सो इट्स सब्स्टिट्यूट गुड तो ये कौन हम गोटाकर प्राइस जब बढ़ला आरटी क्वांटिटी डिमांड विल इंक्रीज है प्राइस ऑफ एक्स इंक्रीजेस क्वांटिटी डिमांड ऑफ वाई इंक्रीजेस ठीक अच्छे ऑल राइट व्हाट इज द नॉर्मल शेप ऑफ द प्राइस कंजम्पशन कर्व कौन अच्छे नॉर्मल शेप तो सेमती कही होनी तार 3टा शेप अच्छे पीसीस है ना नॉर्मल शेप ऑफ प्राइस कंजम्पशन कर्व जनरली डाउनवर्ड स्लोपिंग ही होता है ना कहीं जिते आम प्राइसटा फॉल करे आम एमती देखा ना ये है ना यहाँ आमर इक्विलिब्रियम यहाँ ये आमर नुआ इक्विलिब्रियम प्राइस फॉल करीगला एक्स तो आम पीसीसी गुड़ाक ये जॉइन कर दौले तो इट इज नॉर्मली डाउनवर्ड स्लोपिंग फॉर नॉर्मल गुड्स इट इज जनरली डाउनवर्ड स्लोपिंग कहीं प्राइसटा फॉल कलापर आम अधिक अधिक जो द्रव्यटीर प्राइस कम थी से आम अधिक अधिक किनी था तो इट इज डाउनवर्ड स्लोपिंग नॉर्मली what should be nature of indifference curve at the point of equilibrium it should be tangent to the budget line tangent to the budget line तामाने गोटे पॉइंट रे ही स्पर्श करुथिबो बजेट लाइन को but what effect is caused with the combination of income and substitution effect what effect price effect so price effect is the combination of substitution effect plus income effect ठीक है जी और what does price ratio of two goods in budget line measure slope of the budget line ठीक है जी slope of the budget line give an example of application of indifference curve give an example of application of indifference curve रियल लाइफ रे तुम कौन देखिपर जो भी दीटा जिनस थी जो आमको सब्स्टिट्यूट करिया पड़ो जमती कि आम लेट सपोज लेजर एंड टाइम लेजर एंड वर्क ठीक अच्छे लेजर एंड वर्क तो तुम जब अधिक काम कर आराम कर जदि अधिक लेजर रेस्ट कर तुम काम कर तो इनकम कमीज
এই দুইটা ভিতরে তোমার ট্রেড অফ লাগি রহিব লেজर वर्क ट्रेड ऑफ ठीक अच्छे এটা তুমি দেই পারিও तो वन वर्ड कही तो यू कैन राइट दैट लेजर वर्क ट्रेड ऑफ यही वर्ष आसीथिला क्वेश्चन पिलांकर सेकंड सेमिस्टर पिलांकर आछे ऑल राइट so what is budget space what is budget space okay budget space or budget set ठीक है जी budget space or budget set is the entire set of or you can write set of all possible combinations of goods that a consumer can purchase that a consumer can afford to buy given their prices and income hello I think ये जो क्वेश्चन टा हम करछनी फर्स्ट क्वेश्चन टा एटा बजेट लाइन है बनी पिला माने एटा बजेट स्पेस है और बजेट सेट हैला बजेट लाइन है बनी ओके सॉरी ऑल लिखिছে ना ऑल द कॉम्बिनेशन बजेट सेट ही हबो ओके अबे तुम माने क्वेश्चन करिवो जे देन बजेट सेट आ बजेट लाइन भीतर फरकटा कोन ना मु जानि छी एट तुम कहि देली ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ताहाले बजेट लाइन टा कोन देखो पिला माने एटा जदी हमर बजेट लाइन हैला हैला तो एंटायर स्पेस इज योर बजेट सेट ओके ता माने एई भीतर जे कोनसी कॉम्बिनेशन तमे किनि पारिबो हैला किंतु हम बजेट लाइन कोटा कहबो जोटा कि हमें बाउंड्री जोटा कि द लिमिट ठीक अछि लिमिट कोटा तमर लिमिट एई जो लिमिट हला तो दैट मींस द बजेट लाइन इज द बाउंड्री ऑफ द बजेट सेट ठीक अछि मेक सेंस budget line is the boundary of budget line is the boundary of the budget set I hope it's clear now budget set ro boundary को कहते budget line that means कि जदि आमे समस्त इनकम को खर्च करिबा जहा अछि हम पाखरे इनकम ताको खर्च करिबा ताहाले आमे केउ केउ कॉम्बिनेशन किनिबा हैला लेट सपोज आमे एठी गोटे कॉम्बिनेशन अछि बी हैला आमे एठी जदि आमे एतिकी y किनिबा एतिकी x किनिबा ताले हमर इनकम टोटली खर्च हेउ नाही हैना एंटायर इनकम मस्ट बी स्पेंड जदि आमे एंटायर इनकम स्पेंड करिबा ताहाले एई लाइन थारु आगो को आमे जाई परिबा नाही ए रेड लाइन थारु आगो को आमे जाई परिबा नहीं तो दिस इज व्हाट is the budget line boundary of the budget set okay. Now next is what is marginal rate of substitution कौन कहती क्लास budget marginal rate of substitution that is the amount of one good a consumer can substitute to get one more unit of another good ठीक है एटा इजी टा तुम कर परिबो and slope of the indifference curve is MRS XY indifference map already done what is the shape of indifference curve if two goods are complementary what is the shape of the indifference curve if two goods are complementary to each other केमते आसी बेटा complementary goods क्षेत्र रे so that means कि they will be consumed in a fixed proportion है ना तो ए भलिया L shape ता कोन L shaped right angle or you can say that Leon TF है ना Leon TF shape ये जने economists थिले he told that about this one तो Leon TF भी कहते तो L shape लिखिबाटा बेटर
ओके एल्स लिखो जमती गोटे साइकिल तुम किणुच गोटे साइकिल केतरा बाइक दरकार केतरा चक दरकार दुईटा ना दैट इज ए फिक्स प्रोपोर्शन है ना सो नेक्स्ट इज if two goods are perfect substitute already कही सारी straight line what is the scale of preference what is the scale of preference okay so it means you list you prioritize you make choice ठीक अच्छे आमे जते बड़े आमे जते बड़े किसी गोटे जिनस किनी थाउ आमे कौन करूँ प्रथमे लिस्ट बनाऊ कि अच्छा एटा एटा आनिबार अच्छी है ना तापर हम प्रायोरिटाइज करूँ बेस्ड ऑन आवर रिसोर्सेस कोटा इम्पोर्टेंट कोटा अनइम्पोर्टेंट तापर आउट ऑफ दैट वी मेक द परचेज और जहाँ काम करिवार अच्छी है ना दैट इज द स्केल ऑफ प्रेफरेंस मतलब तमे रैंक करो डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स यू कैन से दैट इन दिस कंटेक्स्ट this is the ability to rank different combination of two goods ability to rank different combinations of two goods okay based on the satisfaction they provide okay next is what does higher indifference curve does reflect indifference curve represents the same level of satisfaction no, at the different combination of two goods है ना same level of satisfaction but higher indifference curve means higher satisfaction है ना how can you calculate marginal rate of substitution change in y divided by change in x what is the nature of the marginal rate of substitution negative diminishing तापर next है why does indifference curve slopes downward come left to right due to the diminishing marginal rate of substitution two indifference curve can intersect each other justify cannot intersect each other okay they cannot intersect each other eta question भूल लिखिए cannot intersect each other justify करिवटा को काहे की करि परिबो नाही एग्जाम डायग्राम करके बुझेइबो तापर why is an indifference curve convex to the origin diminishing marginal rate of substitution describe two applications of indifference curve one is work leisure okay so two applications of indifference curve two applications रे गोटे तो हम जानछंती income and leisure गोटे कहती income leisure trade off आ गोटे आमे कंज्यूमर सरप्लस रे मध्ये आमे यूज करि थाउ तापरे डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स मध्ये रे किए बेटर क्षेत्र मध्ये आमे एटा को अप्लाई करथा इनडायरेक्ट टैक्सेशन व्हिच वन इज बेटर ये डिसाइड करिवारे मध्ये आमे एटा को यूज करता तापरे प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम जो अटेंड करंती आमे है ना एटा तो मन पड़िबो ना प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम आमे सेति मध्ये यूज करथा इंडिफरेंस का तापरे बजेट स्पेस ऑलरेडी कहि सारछि मु why does budget line slope downward काहे कि ना सेति budget line slope downward slope is px by py ना काहे कि ना प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड मध्ये रे डाउन इनवर्स रिलेशन थाए है ना तापरे एठी ए कॉम्बिनेशन है ना ए कॉम्बिनेशन में हमें टोटल इनकम खर्च करबा एठी मध्ये हमें टोटल इनकम खर्च करबा ए पॉइंट रे गोटे बी पॉइंट रे गोटे है ना तो ए पॉइंट रे हमें कोन करछंती एतिकी y नेबा आ एतिकी x नेबा जदि हमें बी पॉइंट को जीवा ताले कम हे जेबो एटा आ एटा हमर बढ़ी जीवो हैला तो एनीवे हम कहबा को चाहछन जे प्राइस आ क्वांटिटी डिमांडेड भितरे डाउनवर्ड
सॉरी इनवर्स रिलेशन अच्छी आउ ता संगरे आमे जो कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स किनिबा कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स जो ए कॉम्बिनेशन बी कॉम्बिनेशन तो आम पाखे इनकम टा स्थिर अच्छी तो आम से इनकम टा को डिवाइड करवा एभली भाव में माने ए आउ बी मध्य कि आम एंटायर इनकम को ही स्पेंड कर पारिबा एंड दैट इज पॉसिबल व्हेन आम जो एक पॉइंट रे अछंती ए रु बी जावाक हेले हमको वाई कंजम्पशन कम करिया पड़िबो आ एक्स रो कंजम्पशन अधिक करिया पड़िबो वाई रो कंजम्पशन कम हेले माने वाई रे टंका जो खर्च करूथबा ताकू कम कर सारले जहाँ टंका बढ़ुची ताकू ही आम एक्स ऊपर खर्च करवा है ना ओके व्हाट आर द कंडीशंस ऑफ कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम ऑलरेडी कहि सारछि मु एमआरएस एक्स वाई इक्वल टू पी एक्स बाय पी वाई एटा लिखि सारला पर याको एक्सप्लेन करबो एमआरएस एक्स वाई माने कोन पी एक्स बाय पी वाई माने कोन कारण एटा 250 वर्ड्स रे अछि 250 वर्ड्स रे अछि व्हाट डू मीन बाय इंफीरियर गुड व्हाट इज एन इंफीरियर गुड व्हाट इज गिफिन्स गुड व्हाट इज इंफीरियर गुड inferior good are those goods in which case the income effect is negative ठीक है and what is giffen good is an inferior good okay giffen good is an inferior good in which case the law of demand doesn't work ठीक है giffen good क्षेत्र रे law of demand काम करे नाही एटा भी गोटे निकृष्ट द्रव्य आ सेठी law of demand काम करे नाही ओके तापर लॉन्ग टाइप क्वेश्चन देखिबा एक्सप्लेन द कांसेप्ट ऑफ बजेट कंस्ट्रेंट कोन बोली लिखिबो हला तापर तमे थियोरेटिकल एनालिसिस ऑफ बजेट कंस्ट्रेंट एंड बजेट लाइन तो बजेट कंस्ट्रेंट को एक्सप्लेन कर सारला पर बजेट लाइन तमे ड्रा करिकि कहबो तापर एटे त तुमको 800 वर्ड कहउछ ना तन को एतरे तमे शिफ्ट देखैबो बजेट लाइन ता केमती शिफ्ट होची है ना ए पॉइंट रो माने ए भलिया अछि तो तार बाम पाखो किबा डाहण पाखो केमती शिफ्ट करूची एटा देखैबो यार कारण कोन टिके बतैबो तापरे एतरे केमिति रोटेट करूची दैट मींस कि प्राइस जदी एक्स रा चेंज हला लेट सपोज एटा हमर बजेट लाइन थिला है ना प्राइस ता हमर राइट साइड को शिफ्ट कर माने रोटेट करी गेला एक्स एक्सिस रोटेट करी गेला दैट मींस कि एतरे कोन हिची एक्स रा प्राइस ता फॉल कर जाईची तो पूर्व अपेक्षा में अधिक एक्स किनि पारु छथि है ना तो शिफ्ट केमती हुए रोटेट केमती हुए ई सारी चीजें एतरे देखेबा ऑल राइट जो 1 नंबर 2 नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर गोटे क्वेश्चन माने गोटे आंसर रे तीनटा क्वेश्चन हे जिवो प्रिपरेशन हैला तापर व्हाट आर द यूजेस ऑफ इंडिफरेंस कर्व ऑलरेडी कहि सारछि टैक्स रे हेबो एटा एते आसेनी किंतु तमे इनकम लेजर ट्रेड ऑफ एटा टिके नजर करके जाइथिबो कारण एटा एथरो परीक्षा रे ना एटा तमर पडिबोनी इनकम लेजर बट एप्लीकेशन ना एटा एथरो पडिछि तमर सेकंड सेमेस्टर पिला मानकर पडिछि ओके एटा तमर इंपोर्टेंट व्हाट इज इंडिफरेंस कर्व स्टेट इज assumptions यार assumption कोन convexity रहिबो डिमिनिशिंग मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन रहिबो है ना आ कोन प्रॉपर्टी assumptions अछि they will not intersect each other है ना ये सारी चीजें देखनी जो एमआरएस कोन स्टेट इज नेचर एंड प्रॉपर्टीज एमआरएस कोन एमआरएस इज जहाँ लिखिबो एमआरएस माने कोन तापर स्टेट इट्स नेचर एंड प्रॉपर्टीज तो इट नेचर एंड प्रॉपर्टीज रे कोन लिखियो मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन प्रॉपर्टी कोन डिक्लाइनिंग टाइम डिमिनिशिंग है ना आ एटा हम केमते देखांती डिमिनिशिंग मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन को केमते देखेबा कन्वेक्स शेप रे किंतु जदी कनकेव हबो ए भली हबो तो एठी हमर एमआरएस इंक्रीज करता है ठीक है ए क्षेत्र रे एमआरएस एक्सवाई इंक्रीज करता है दिस इज कनकेव शेप है ना आ एटा हो हमर कन्वेक्स क्षेत्र रे हमर डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन हे था डेफिनेशन लिखिबो तापर ए भलिया तमे ड्रा करिवो तापर तमे तापर तार प्रॉपर्टीज कहबो जेटा डिमिनिशिंग हेले केमती हेबो आ सेटा कोन कहंती इंक्रीजिंग हेले केमती हेबो तापर एटार यूज कोन हमर एमआरएस एक्सवाई सहित आमे कोन करंती प्राइस रेशियो सहित आमे याको इक्वल करंती है ना आ एमआरएस एक्सवाई इज इक्वल टू MUX by MUY एटा मतलब मार्जिनल यूटिलिटी divided by margin मतलब दीटा जाकर रेशियो यूटिलिटी मार्जिनल यूटिलिटी x and y रो रेशियो एटा and this should be equal to the px by py at the point of equilibrium है ना जोटा कि ए 7 नंबर टा भी सेतरे आसुची ओके
तापर मेक ए क्रिटिकल वैल्यू इवैल्यूएशन ऑफ इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस क्रिटिकल इवैल्यूएशन रे तुम कोन कोन लिख परियो कि इंडिफरेंस कर्व व्हाई इट इज बेटर देन द ऑर्डिनल sorry why it is better than cardinal analysis cardinal analysis माने जो आम मेजर कर यूटिलिटी एनालिसिस ठारूटा कहीं बेटर है सेटा करियो कि जनरली ये भाया क्वेश्चन आसे ना तो आसला भाया लगुनि ओके चलो तापर आम नेक्स्ट देखा ये चैप्टर सरीगला इंडिफरेंस कर्व रो प्रॉपर्टीज अजम्पशन नेचर सब बढ़ की जीव है इक्विलिब्रियम केमती हो सेटा भी बढ़ की जीव से ही तुम बजेट लाइन आउ एमआरएस ये सब आसीज है तापर इंडिफरेंस कर्व इज न्यू वाइन इन ओल्ड बटल ठीक अच्छे तो यहाँ तुम देखी पार जे प्रेफरेंस ये इंडिफरेंस कर्व हो प्रेफरेंस एनालिसिस ओके प्रेफरेंस ओके तो सेठी इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस रे जो अजम्पशन अच्छी एटा गोटे देखियो करेक्शन करिवो एटा कौन कौन अजम्पशन आसीबो गोटे तो हमर डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन डिमिनिशिंग आसीबो नंबर 1 नंबर 2 ट्रांजिटिविटी that means जदि A is greater than B और B is greater than C that means A is greater than C है मतलब A बंडल को B बंडल ठारो प्रिफर करुची है माने कंज्यूमर A और B ए दीटा मध्यरु A को चॉइस करुची तापरे B एवं C जदि दीटा बंडल अच्छी ताले से B चूज करुची दैट मीन्स कि कंज्यूमर A choosing A bundle over C bundle ठीक है ताको ट्रांजिटिविटी कहते 3 नंबर है assumption of consistency ये गोटे assumption है consistency that means consumer is consistent in his behavior ठीक है consistent in his behavior मेन गुड़ा तुम कही दो जहाँ तुम मन पड़ेगा देखियो 1 2 3 तापर कंटिन्यूटी assumption of continuity या मतलब है जे कंज्यूमर जहाँ तार पसंद अच्छी है जेमिति कॉम्बिनेशन से गुड्स को कंज्यूम करने को चाहूँगी ही कैन रैंक देम अकॉर्डिंग टू हिज प्रेफरेंस ओके ही कैन रैंक मतलब कोई पारिबो जे एटा मु पसंद करछि सेटा करू नहीं पसंद है तो ही कैन रैंक हिज प्रेफरेंस ओके एमती नुह जे से कहबो कि मु ए को लेट सपोज से कहूँ जे मु ए को बी ठारू पसंद अधिक पसंद कर दैट मीन्स ए बंडलटा तार मोस्ट फेवरेट बंडल दैट मीन्स कि ही विल नॉट गो फॉर बी ठीक अच्छे तापर ही कैन टेल जे ए आउ बी मध्य से बी को पसंद करुच्ची बेसी है कि से कही पार जे ए इज आज इक्विवेलेंट टू बी मतलब ही इज इंडिफरेंट बिटवीन ए एंड बी तो यहाँ को आम से कौटी गोटे ब्रेक हो ना पसंद है तो ही कैन रैंक हिज प्रेफरेंसेस दैट इज assumption ऑफ कंटिन्यूटी तो ये मेन ये 3-4टा अच्छी गोटे है ऑर्डिनल यूटिलिटी है माने आम मेजर करिपरिबा नहीं ऑर्डिनल यूटिलिटी सो दिस इज one more assumption then 6th one is that consumer is rational consumer विचारवंत व्यक्ति होइथिबे ओके एटा इंपोर्टेंट अछि एटा देखियो assumptions तापर प्रॉपर्टीज रे तमे देखि नै जिवो they must slope downward from left to right they represent
different level of satisfaction, and higher indifference curve means higher level of satisfaction.